Welcome to a new class, and in this class we are learning about single crystal X-ray diffraction, the point which are left from XRD. Okay, so whatever this XRD is there, while we were learning in our previous classes about XRD, at that time I told you some detection methods or some methods to detect structure and geometry, and that method is nothing but the general method we use for our structure and geometry determination, and that is nothing but XRD. And the long form of XRD is very well known to everyone. And what is that? X-ray diffraction. So whatever this XRD is there, this XRD is helping us to determine the structure and geometry of our crystal structure. And now in today's class, as I told you just now, we will learn about simply single crystal X-ray diffraction. What does it mean? Or what for we are learning about this? See, whenever we are learning the crystal structure at that time, simply अगर से हमारे पास में बहुत सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है और उन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में से हमें क्रिस्टल का भी अगर से हम स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री डिटरमाइन करते हैं, तो बाकी के सारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो कुछ भी स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री होगा, इट विल बी द सेम. सो ऑन दिस बेसिस वी कैन गिव सिंपली a single crystal X-ray diffraction. But whenever we were recording these methods, at that time single crystal method was being difficult, or this technique was given by the scientist, as we have seen this part in a hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay. So whatever this our single crystal diffraction is there, this diffraction we use for wait a minute, I'm loading the whiteboard. Is whiteboard is visible to everyone? Yes, ma'am. Hello, is whiteboard is visible? Yes, ma'am. Yes. Okay. So Oh, ma'am, this time. yeah, okay. So whenever we are here to learn our single crystal X-ray diffraction, at that time this single crystal X-ray diffraction is necessary, or it is used for the study of four factors. And what are those four factors which are from our syllabus? What for we are using this single crystal X-ray diffraction, that you please firstly clear out. See, whenever you are learning about single crystal X-ray diffraction, at that time single crystal X-ray diffraction methods we are determining or we are using for the determination of very first one point for this single crystal determination is nothing structure factor. Horizontally लिहिते मी पूर्ण पॉइंट बसावा म्हणून. Structure factor, then after next is electron density, electron density. This is density rho. Number next, I'm drawing all this by my fingers. That's why please consider my handwriting. Phase problem. And very last point is nothing but structural refinement. What's that? Structural refinement. It is nothing like hi-fi word. It's a very simple one. And whatever the structural refinement is there, wait a minute, let me just refinement word बसत नाहीये.
So it is nothing but refinement. What is mean by this structure factor, electron density, then the phase problem and the structural refinement? All these points we will study out in detail. But what for this single crystal X-ray diffraction is that this technique was modified by simply by William and his son Lawrence and this technique is based on to the Bragg's equation, or you can say this technique is based on to the Bragg's method, which we have used in the crystal structure analysis. That is nothing but hello. हाँ मैडम येतोय आवाज. नाही, Rajeshri, why are you representing? Why are you trying to represent something? Don't do anything from your side, guys. So here we are representing single crystal diffraction technique was given by or was modified by the scientist William and his son Lawrence. And whatever this method is there, this method is based on to the Bragg's equation, or you can say in another words that is nothing but on Bragg's method. So whatever this method is there, this method is given or it is used for a single crystal, but when we were using or when we are using a single crystal, then also there are some reflections which are extra reflections. Means what? जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था हम जैसे मिलर इंडाइसेस में एक्स टुवर्ड्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस बताते हैं ना कि एक्स एक्सिस पे समझ लीजिए 1 सेंटीमीटर इतने डिस्टेंस पे, वाई पे 1 सेंटीमीटर इतने और जेड पे एक्स इतने सॉरी एक इतने डिस्टेंस पे, तो इन तीनों का जो कुछ भी हमारा इंटरसेप्ट होता है, दिस इज नथिंग बट द यू कैन से इन द वर्ड दिस इज एज अ reflection. This is as what beta? Reflection. So once you got clear with the reflection, now when you are using a single crystal, listen very carefully what I'm trying to tell you. Whenever you are using the single crystal X-ray diffraction, at that time whatever this technique is given by the scientist William and his son Lawrence, then what happened or they used what and to explain what. So they used this method uh, on the basis of Bragg's equation and Bragg's method. Then after whatever this method is there, this method is used for a single crystal analysis, or this method is using us only single crystal. But when the scientists were using only a single crystal, then also what happened? Then also there were some extra reflections were there. Some extra reflections were there means अगर से हमें अब 100 का रिफ्लेक्शन बोलना है या हम अब स्पेसिफिकली 100 या फिर 110 या फिर 111, ये जो कुछ भी रिफ्लेक्शंस होते हैं हमारे, ऐसे एक ही क्रिस्टल लेने के बाद भी क्या हो रहा है, क्या हो रहा था कि क्या हो रहा था कि ये जो रिफ्लेक्शंस थे, extra reflections were observed, and whatever these extra reflections were observed, because of these extra reflections, whatever the technique is there, this technique is not helpful, or this technique was not giving us exact structure and the geometry of our crystal structure. That is why whatever the scientist William and his son is there, they have improved, or thereafter some improvements in this instrument is there, and this technique or this improvement is known as 4RD diffractometer, which I told you in my previous class, which technique we are using. और ये जे का सिंगल क्रिस्टल नीट है का, सब लोग अच्छे से सुनो, सब लोग प्रेजेंट हो ना? Are you listening, guys? Yes, ma'am. Yes ma'am. Okay.
I'm not going to tell you any to start any video like that, but you have to be serious yourself only. Okay, so whatever your this single crystal is दिया, क्यों हम सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डायफ्रैक्शन ले रहे थे, तो उसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत क्यों आई? क्योंकि ये जो कुछ भी सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डायफ्रैक्शन था, उसमें क्या हो रहा था, दो we were using a single crystal at that time, what happened at that time, extra reflections were occurring. क्या हो रहा था? एक्स्ट्रा रिफ्लेक्शंस हो रहे थे, मतलब जैसे पैटर्न्स मिलने चाहिए थे वैसे मिल रहे थे क्या? एक्सपेक्टेड नहीं, इसीलिए हमने इंस्ट्रूमेंट को कुछ इम्प्रूव किया। तो वो जो कुछ भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ये सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डायफ्रैक्शन के लिए, उसमें जो कुछ भी चेंजेस किए उसे हम नाम देते हैं 4R diffractometer. What is that I am going to write on whiteboard, and what is that 4R diffractometer? अच्छे से सुनो, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है। हम कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन आएगा ये बोल नहीं सकते। सो यू गाइस कैन नोट इट डाउन विच फॉर द इंस्ट्रूमेंट हम ये सिंगल क्रिस्टल के लिए जो यूज कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट या फिर ये जो कुछ भी टेक्निक है, ये कौन सी टेक्निक है? 4R diffractometer. Which is this technique? 4R diffractometer. Are you guys clear which method we are using? Or are they diffractometer? Okay, so when once you are clear with this 4R diffractometer, and now फिर आप लोग मुझे पूछोगे कि मैम ये 4R diffractometer मतलब क्या, या फिर इसमें क्या कैसे अरेंजमेंट होती है, ये हमें आप बता सकते हो क्या? So yes, whatever this technique is here, this technique is including simply one instrument like Bragg spectrometer, and like that arrangement is there, and whatever this arrangement is there, this arrangement or this instrument is linked to the is linked to the computer, is linked to what? Computer. And when you are linking it to the computer, then what happens? Then whatever this computer is there, it will compute all the your recordings, and then after analysis, and then after you can have a digital recording of your this crystal structure. But again, whatever this crystal structure is there, this crystal structure, why we are using this why we are using this for, or the diffractometer, or what is the help of this what is the help of this your method? See, what for we are using this method? So this method is used to study the unit cells. What to unit cells? See, whenever we are learning any crystal structure, at that time unit cell is very very important one. Why unit cell is important one? Because whenever you are learning about any crystal structure, at that time what happens? At that time, whatever the crystal structure, any solid is if you have any solid, then wait a minute, let me just take another one slide. So what are these? 4R the diffractometer is there. This 4R the diffractometer is linked to a this is connected to a computer, and now we are connecting, or now we are inserting our compound which we want to analyze. Now in this in this our crystal structure, what we find out or what we determine? So we are determining simply a unit cell, simply a unit cell. And what is mean by unit sorry what is mean by this unit cell?
unit cell is looking like this, and whatever your unit cell is there, this unit cell you can determine this if you find out the crystal structure of one unit cell, मतलब कि देखिए अब यहाँ पर मैं यूनिट सेल का मतलब यहाँ पर एक क्यूब लेकर बता रही हूँ फॉर एग्जाम्पल क्यूबिकल पैटर्न के लिए, बट अगर से हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में टेट्रागोनल, ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक ऐसे कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगे तो हम कैसे बता सकते हैं, तो हम सिंपली बता सकते हैं ये चीज बाय यूजिंग सिंपली योर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पर हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझ लीजिए क्यूबिक है, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्यूब निकाल के बताया है। बट अगर से हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर का यूनिट सेल मतलब कि वो अगर से टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, ट्राइक्लिनिक है या फिर और दूसरा कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में इनके बजाय तो फिर अब हमें यहाँ पर जो कुछ भी हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर सिंपली हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये मेथड से। मतलब आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? इस सिंगल क्रिस्टल एक्सरे डायफ्रैक्शन की हेल्प से हम क्या डिटरमाइन कर रहे थे, हमारे सिंपली क्रिस्टल एनी क्रिस्टल का क्या डिटरमाइन कर रहे थे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। बट जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकाल रहे थे क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया। हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज ब्रेक होतो आवाज मॅम ब्रेक मध्ये. कॉल कॉल आला होता त्याच्यामुळे होत होतं। आता येतोय का क्लिअरली? मॅम म्हणजे हॅलो, आवाज येतोय का? हो मॅम मॅम येते. Yes, there was call and continuously someone is calling back to back. That's why my voice was breaking. Now am I audible clearly? Yes Where ma'am. okay, where from you are not able to audible? कुठपर्यंत ऐकलत तुम्ही? हॅलो हॅलो Point this technique is used to determine the structure of unit cell असं चालू होतं मॅम. ओके ओके ओके, थँक्यू. सी, ही जी काही टेक्निक है ही टेक्निक अपन कशासाठी वापरत होतो? सी देखिए, ये जो कुछ भी टेक्निक है ये टेक्निक हम किस लिए यूज कर रहे थे, सिंगल क्रिस्टल यूज करके हमारा जो कुछ भी क्रिस्टल होगा उस क्रिस्टल का मतलब हमारे पास अगर से समझ लीजिए 10 ग्राम इतना हमारा सैंपल है सॉलिड का। अब उस सैंपल का हमें एनालिसिस करना है। आप लोगों को उसका कुछ भी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री कुछ भी पता नहीं है, मतलब न्यूली आपने बनाया है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके, तो न्यू क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब भी आप बना रहे हो तब क्या होगा, न्यू क्रिस्टल स्ट्रक्चर आप बना रहे हो मतलब क्या होगा कि सिंपली अब ये जो कुछ भी आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगे, दैट माइट बी क्यूबिक, दैट माइट बी टेट्रागोनल, दैट माइट बी मोनोक्लिनिक, दैट माइट बी ऑर्थोरोम्बिक, दैट माइट बी हेक्सागोनल और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनमें से जो कुछ भी आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें फाइंड आउट करना है। बट वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है मतलब क्या, क्रिस्टल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या फिर रिपीटिंग ओवर यूनिट किसके होते हैं, जैसे कि हमने क्रिस्टल और हमारे XRD जब हमने लिया था तब हमने ये चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ा था, किसी भी क्रिस्टल का या फिर किसी भी क्रिस्टल का या फिर किसी भी सॉलिड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब आपको फाइंड आउट करना होता है तब उसमें जो रिपीटेड यूनिट होते हैं वो किस चीज के होते हैं, यूनिट सेल के। किसके होते हैं बेटा, यूनिट सेल के। मतलब एक बेसिक जो कंस्टिट्यूशन होता है, बेसिक क्या होता है, कंस्टिट्यूशन होता है। क्या होता है बोला मैंने अभी भी, बेसिक जो कंस्टिट्यूशन होता है आपके क्रिस्टल का, इट इज नथिंग बट यूनिट सेल। इट इज नथिंग बट व्हाट गाइस? वाह, Unit cell. it is what? Unit cell. So whatever these unit cells are there, these unit cells we are determining by through what? By this method. This method मतलब क्या?
4 are the by using simply 4 are the diffractometer, and this method is now giving us simply the our shape, geometry, crystal shape, size, geometry, and the symmetry of our crystals. Can I rub this? Can I erase this slide? If you are clear with this slide, then can I rub this? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. मी सेव्ह करत नाहीये स्लाइड्स, डायरेक्टली क्लिअर करते. So whatever this method is there, this method is helping us to determine simply the geometry. काय डिटरमाइन करायला हेल्प करते आपल्याला ही मेथड? Geometry of crystal structure. Second is structure, shape of crystal. सी असाही क्वेश्चन येऊ शकतो बर का, की MSQ मध्ये येऊ शकतो हा क्वेश्चन. जे आपली तर मेथड आहे MCQ, पण जेव्हा तुम्ही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम देणार, वेन एव्हर यू आर फेसिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम, at that time they may ask you single crystal X-ray diffraction method you can use, or in for the diffractometer what are you determining. So that four things are nothing but, at that time you if that is a MSQ question, then you have to choose each and every option which is like, first, if first option is like geometry, then second option is like shape, next option is like your size, and very last one option is symmetry. वेरी लास्ट वन ऑप्शन इज सिमेट्री. मतलब कि ये टेक्निक अब हमारे किसी भी सॉलिड के क्रिस्टल की, किसी भी सॉलिड के क्रिस्टल की, किसी भी सॉलिड के क्रिस्टल की क्या क्या हम डिटरमाइन करते हैं? ज्योमेट्री, शेप, साइज एंड सिमेट्री. ओके, सो अब ये जो कुछ भी हमारी डायफ्रैक्शन मेथड है, इस डायफ्रैक्शन मेथड में हमारे जो कुछ भी इंटेंसिटीज, मतलब जो हम जो कुछ भी हम सोर्सेस यूज करते हैं, उनमें जो कुछ भी डायफ्रैक्शन के इंटेंसिटीज होते हैं, ये इंटेंसिटी के जो कुछ भी मेथड से, ये मेथड वाज given by the scientist Lawrence and William. Lawrence and the William. But these scientists were not able to give you geometry and the shape of a molecule. But मतलब कि जो विलियम और लॉरेंस, मतलब हमने विलियम एंड उसका सन जो लॉरेंस था, उन्होंने जो सिंपल मेथड सिंगल क्रिस्टल की देनी चाहिए देने जा रहे थे, उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमें फाइंड आउट हो रही थे कि स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री मिल रही थी क्या? बिल्कुल भी नहीं. इसीलिए हमने वो जो कुछ भी सिंगल क्रिस्टल मेथड है, उसको हमने कंप्यूटर को कनेक्ट किया, मतलब एक टेक्निक, अच्छी टेक्निक दी, और उस टेक्निक में हम क्या क्या डिटरमाइन कर पाए. कौन सी टेक्निक दी अब मुझे याद नहीं आ रहा है, बताओगे क्या आप लोग? Or the diffractometer. Very good. Only Rakunde is present. All of you are absent, na? Just you have started your WebEx and you are wandering here and there, right? Ma'am. What about others? Are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अजून कोण कोण आहे? Yes, ma'am. Present, ma'am. अजून? Yes, Present. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Continue. I'm going to ask you some questions after my session. Okay. So be present. Okay, before starting anything or before going towards any point which I taught you at the starting of single crystal X-ray diffraction, the 4 points which we can learn, that are like structure factor, electron density, phase problem, and structural refinement. So we will study all these points, but before that, you guys please tell me, are you clear with which I told you till time? Yes or no? I'm waiting for your replies. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am.